Good morning. Today we will start chapter Buildings in Basic Civil Engineering. Buildings. So a building is a structure with a roof and walls that is constructed for human use, shelter or activity. It serves various purposes such as living, working, storage, recreation or safety. Building can be temporary or permanent and are designed to protect people and assets from environmental elements like rain, wind, heat and cold. So our first topic is selection of site for buildings. Selecting the right site for a building is crucial because it affects safety, cost, functionality and sustainability. So these are the factors to be considered during selection of building site. Purpose of building, friendly neighborhood, available facilities, government laws, shape and size, terrain condition, type of ground soil, natural light and air, environmental conditions, legal and financial aspects, and other factors. So first point is purpose of building. The purpose of building is a major factor in selecting a site because it determines how the building will be used, its size, layout, utilities, and even location. Different types of building have different needs and the site must support those needs to ensure the structure functions efficiently, safety, and economically. Friendly neighborhood. The site should be situated in locality which is already fully developed or which is fast developing. To secure happy living conditions, generally such neighborhood is preferred where the neighbors belong to an equal status in society and who should be social and friendly. Available facilities. A well-designed building must be located in a site where essential facilities are easily accessible. Having all required facilities nearby ensures that the building serves its purpose efficiently, provide comfort and safety. The building should be located in a site where all essential facilities such as water, electricity, roads, sewage, healthcare, school, markets and communication networks are readily available nearby. Next is government laws. Key government laws and their impact on site selections are like zoning laws, define how land can be used like residential, commercial, industrial or agricultural. Ensure that buildings purpose align with permitted land use. Avoid penalties or demolition if rules are violated. Building codes and safety regulations are important in all government laws. Also, environmental laws protect ecosystem and water bodies, forest and air quality. Ensure the site is not in floodplain, wildlife reserve or contaminated zone. Land ownership and registration laws are important in all government laws. Shape and size. The shape refers to the layout or form of the building in plan and elevation. Common shapes are chosen based on the purpose, structural efficiency, and aesthetics. Normally, rectangular or square shape are preferred for economical, easy to plan rooms and circulation, efficient use of space and materials. And we will take L-shaped and U-shaped in for the building requirement. Terrain condition.
The site should be situated on an elevated place and also leveled with uniform slope from one end to the other so as to provide good and quick drainage of rainwater. Type of ground soil. Type of ground soil is most important. The ground soil of site should be good enough to provide economical foundation for the intended building without causing any problems. एक्चुअली टाइप ऑफ ग्राउंड सॉइल में आपकी मेनली बियरिंग कैपेसिटी जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है उसी से हम फाउंडेशन का जो टाइप है वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। जितनी अच्छी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी होगी, फाउंडेशन का जो साइज है वो कम होगा। और अगर बियरिंग कैपेसिटी आपकी नहीं अच्छी है तो सेम बिल्डिंग आप जब बना रहे हो लो बियरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल पे, तो फाउंडेशन की साइज जो है वो बहुत ज्यादा आती है उसमें। तो टाइप ऑफ ग्राउंड सॉइल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप कोई बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट करते हो उसके लिए। Next is natural light and air. The location of site should be such as to ensure unobstructed natural light and air. Environmental conditions. The site should be available in a locality where natural beauty and man-made environment create healthy living and working conditions. Environment also affected by nearest factories. So these things also need to be considered. Next is legal and financial aspects. Legal and financial aspects are most important during the site selection. The legal and financial aspect which dictated upon ownership rights and the cost should be given due to consideration before the purchase of the plot. And finally, other factors are site should be abandoned under adverse circumstances such as unhealthy, noisy, crowded locality, immediate neighborhood or rivers carrying heavy floods, badly maintained drains, reclaimed soils or waterlogged areas subject to submergence or settlement, and industry vicinity having smoke and obscenous odors. Next, we will discuss type of buildings. According to National Building Law of India, the buildings are classified on the basis of occupancies as follows: residential building, institutional building, educational building, assembly building, business building, mercantile building, industrial building, storage building, hazardous buildings. So first, residential building. रेजिडेंशियल बिल्डिंग पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बिल्डिंग्स आपकी लिविंग एंड नॉर्मल ह्यूमन पर्सन के रहने के काम में जो आती है वो बिल्डिंग्स आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कंसीडर होती है। उसके अंदर आपकी बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, मतलब फ्लैट, अपार्टमेंट्स एंड रेसिडेंसेज, ये सारे जो हैं वो आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ही कैटेगरी में आएंगे। Then next is institutional building. Institutional buildings जो हैं, जितने भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड रजिस्टर्ड ट्रस्ट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये सारे के सारे जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जो हैं उस कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद में ये जैसे आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स की एग्जांपल्स आप देख रहे हो। फिर नेक्स्ट है आपके एजुकेशनल बिल्डिंग में स्कूल, कॉलेजेस जो हैं ये सारे एजुकेशनल बिल्डिंग में आते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब एजुकेशनल बिल्डिंग्स जो हैं उसमें आते हैं। नेक्स्ट इज असेंबली बिल्डिंग्स, जो पब्लिक गैदरिंग के टाइम में जो बिल्डिंग्स काम में आती हैं, जिसके अंदर आपके हॉल्स, मूवी हॉल्स जो हैं वो हो गए, म्यूजियम, रेस्टोरेंट्स, डांस क्लब्स, ऑडिटोरियम्स, जिम्नेजियम, ये सारे जो हैं वो आपके असेंबली बिल्डिंग्स जो है उसके अंदर कंसीडर होते हैं। ये सारी कैटेगरीज इसलिए बनाई है
कि जब भी बिल्डिंग आपके डिजाइन होती है तो उनके जो लाइव लोड हम लेते हैं उसके बिल्डिंग के पर्पस के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी तो उसका लाइव लोड अलग कंसिडरेशन करके लिया जाएगा। असेंबली बिल्डिंग जो है उसका लाइव लोड और ज्यादा होगा। आप कितनी असेंबली के लिए बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो तो वो इसलिए पर्पस, ये टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप के बिल्डिंग्स हैं और आप कौन सी टाइप की बिल्डिंग में वर्क कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी जो डिजाइन है वो भी डिपेंड करती है। फिर नेक्स्ट है हमारे जो ये आपकी असेंबली बिल्डिंग्स हैं, जैसे संसद और ये पार्लियामेंट, एग्जांपल्स ऑफ असेंबली बिल्डिंग्स हैं। फिर उसके बाद में बिजनेस बिल्डिंग, इफ अ बिल्डिंग or a part of it is primarily used for the keeping records of business transaction, maintaining accounts, bookkeeping purposes, or managing other types of records, then it can be classified as a business building. Buildings under this category include offices, banks, and other professional establishment serving aforementioned purposes. Next is mercantile buildings. In these type of buildings, either the entire building or a part of it is used for housing shops, stores, or showrooms where display and sale of wholesale goods, retail goods, and merchandise is carried out. Such buildings should also accommodate office, storage, and service facility essentially for the business, which should be located in the same building. Industrial building used to manufacture, assemble, or process product or material are termed as industrial building. They include manufacturing unit, assembly plants, factories, mills, power plants, oil refineries, gas plants, dairy plants, laboratories, etc. Storage buildings, if a building or a part of it is used for the storage of commodities, goods, merchandise, then it is categorized as a storage building. They comprise buildings such as warehouse, cold storage, grain storage unit, etc. Hazardous building, these types of building have been further divided into two subcategories by government: buildings used for the manufactured, processing, handling, or storage of substances which are radioactive, highly combustible, explosive, or capable of burning rapidly with or without the potential to produce poisonous fumes or emissions that are explosive in nature. Now we will discuss building components of and their functions. So foundation, plinth, sill, lintel, chhajjas, door, windows, ventilators, floors, roofs, beam, parapets are the building components. So ये आप बिल्डिंग कंपोनेंट्स का जो एक डायग्राम है वो भी हमने दे रखा है इसके अंदर। लिंटल्स जो हैं, अब आप देखिए कि लिंटल्स जो ओपनिंग के ऊपर आपका बीम या सपोर्टिव होता है उसे लिंटल बोलते हैं। ये विंडोज, इस तरह से ये पूरा एक डायग्राम है जिसके अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। और हम वन बाय वन बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो है और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग आपकी फाउंडेशन डिजाइन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। फाउंडेशन डिजाइन के लिए हमको सबसे पहले जिस ग्राउंड की जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग क्या है वो हमको आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका किसके ऊपर आएगा, फाउंडेशन के ऊपर ही आएगा। तो फाउंडेशन की जो मेनली वर्क है वो आपका क्या रहेगा, स्प्रेड द लोड रेगुलरली एंड सेफली फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल, secures the building
firmly to ground and prevents the building movement under any lateral load, provides an even surface for construction of superstructure, prevents the overturning of building due to lateral forces. This is the picture of the foundation. The plinth level is the level up to which the foundation is built and above which the walls of the building starts. It usually raised above the ground to prevent water, moisture or debris from the entering the building. Next building components are sills, lintels and chhajjas. The sill is the horizontal part located at the bottom of a windows or opening in a wall. It supports the window's frame and helps prevent water from entering the building. Lintel. A lintel is a horizontal beam placed above door, windows and opening in walls to support the load from the structure above and transfer it to the sides of the opening. And chhajjas. A chhajja is a projection or overhanging structure above window or doors designed to shield them from rain and sunlight. So these are the pictures which is presented lintel. These are sill level and these are chhajjas. Doors, windows and ventilators. The function of door is to provide access whether necessary to different rooms in the building. The size of door should be enough to facilitate the movement of large object likely to pass through the door. Windows are fitted on the outside wall to provide light ventilation inside the building. The standard window area should be 15 to 20% of the floor area. Ventilators are small windows with fixed glass panel that permit ventilations. They are provided at or very close to the roof or floor level for enough ventilation. So these are the ventilator, doors, windows. Floors provide a useful working area for the residents. The ground floor are filled with brickbats, waste stone, gravel, and with other material up to the plinth level, which is very compacted with a sand level on top. The floor are provided with RCC, mosaic, marble finishes. Roof, beam, and parapet. Roof is the topmost portion that protects the building. The beam are supported on columns and walls used for flat roofs in which higher floor needs strengthening with beams. On the top of the roof or terrace, a wall is provided along the outer edge of the roof as a protection wall known as parapet. So this is roof, this is called beams and it is parapet. Sorry. So now we will discuss some important definition like plinth area. So plinth area is also called built up area and is the entire area occupied by the building including internal and external walls. Plinth area is generally 10 to 20% more than the carpet area. So what is carpet area? Carpet area is the covered area of usable space of rooms at any floor. The carpet area of apartment will not include the thickness of inner walls, the space used in building, the lobby, elevators, stairs and play areas. So carpet area plus wall area equal to built up area or plinth area.
Building bylaws. Building bylaws are a set of rules or developers having to abide by while developing projects. The building bylaws oversees the following rules, regulations of building features. First, setback or building line, floor area ratio, open space requirement all over the building, plan showing internal dimensions of rooms, kitchen, living, etc. Cross-sectional detailing showing height of building and floor height, lighting and ventilation of rooms. बिल्डिंग बायलॉज जो हैं वो फॉलो करने किसी भी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे आप सोचिए कि एक प्लान जो है, सबसे पहले यूआईटी में क्या है कि कोई भी आप जो भी आप हाउस बना रहे हो या कोई भी पर्पस की बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसका सबसे पहले प्लान जो है वो यूआईटी में सबमिट होता है. तो जिस कैटेगरी की वो बिल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग है या नहीं है वो उसको चेक करते हैं. उसकी हाइट के जो बायलॉज हैं, बिल्डिंग बायलॉज की पूरी बुक है जिसके अंदर सारे रूल रेगुलेशंस जो हैं वो आपके उसके अंदर इनबिल्ट हैं. तो उन बायलॉज से चेक करते हैं कि आप जो भी पर्पस की बिल्डिंग बना रहे हो उसमें ये सारे रूल रेगुलेशंस आपने फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग आपको परमिशन जो है वो वहां से मिलती है कि ये प्लान ओके है और आप इसके अकॉर्डिंग बना लीजिए. तो ये बायलॉज जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं. जैसे सेटबैक के रूल्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सेटबैक जो है वो क्या होता है, सेटबैक इज द ओपन स्पेस अवेलेबल बिटवीन द फ्रंट of building and roads. The merits of setbacks: the open space left in the front of building is highly advantage under the circumstances of widening of road in a near future. If all buildings parallel to the roads follow the setback rules and construct accordingly, the aesthetic of the locality will improve. The air ventilation and the air ventilation and light of the building is sufficient if setbacks maintained to the plots. The open space can be utilized for gardening or vehicle parking purposes. The marginal distance always helpful for the building in case of heavy traffic and other nuisance. Floor area ratio or floor space index is the ratio of sum of all floor area upon area of the plot. So total built up area equal to total plot area minus all open spaces area. The local authority is responsible for governing the value of FAR, floor area ratio. Floor area ratio can be utilized for checking the density of the population. Example of FAR: if the plot area is 1200 square feet and if the allowable FSI is 0.8, then maximum built up area allowed for a plot is 960 square feet as per the definition of FSI. So now we discuss the building code for clear understanding the built up area versus the plot area. If plot area is less than 200 meters square, then maximum allowable built up area is 60% with two-story structure. From 200 to 500 meters square, 50% of the plot area. From 500 to 1000 meters square, 40% of the plot area. Above 1000 meters square, 33.33% of the plot area. Next is open space requirement to all over the buildings. As per NBC, the open space for different height of building is listed. Height of building less than 10 meter. This is the open space requirement for the less than 10 meter. From 10 to 25 meter requirement as per above. From the 25 to 30, minimum 10 meter, greater than 30 meter. So these are the as per NBC. This is
The rule for plan showing internal dimension of rooms, kitchen and livings. So these are the specification for the one habited room, two habited room, kitchen with store room, kitchen with come dining room, bathrooms, living rooms, all are the plan showing internal dimensions and room. These all are as per NBC. This is cross-sectional details showing the height of building and floor height. And lighting and ventilation of the room. In order to get proper air and ventilation to rooms of building, all openings such as windows, ventilators or direct openings are provided at suitable places. So for dry and hot climate, excluding doors area, minimum 1/10 of the floor area. For wet hot climate, excluding door areas, minimum 1/6 of the floor area. The total doors, windows and ventilators less than 1/7 of the floor area. Next topic is how orientation affect ventilation. There are various factors which affects the orientation of the building as per ventilation requirement. So maximizing natural airflow. Building oriented to align with prevailing wind direction can capture more fresh air and facilitate cross ventilation. If the main opening are aligned of the prevailing wind, air can flow through the space easily, reducing the need for mechanical cooling. Avoiding wind stagnation. Poor orientation can block airflow due to barriers like other buildings, hills or trees. Stagnant air leads to heat building built up, poor indoor air quality and higher energy consumption. Stack ventilation. Sun exposure affects how air inside the building heats up. Warm air rises and escapes through vent or opening at the top, drawing cooler air from lower opening. Poor orientation ensures that solar heat gains are optimized to enhance this upward airflow in hot climate. Heat and moisture control. In hot, humid climates, orientation a building to maximize airflow helps remove moisture-laden air and reduce discomfort. Building aligned with seasonal wind pattern allows for passive cooling and heating. Our next topic is reinforced concrete, RCC. सो रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो है वो एक कंपोजिट मटेरियल है. इसके अंदर कंक्रीट और स्टील का कंबाइंड मटेरियल है. इसमें कंक्रीट जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अच्छा रहता है और स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होती है. तो जनरली बिल्डिंग में दोनों टाइप के लोड्स लगते हैं. तो जहां टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा आ रही है वहां पे हम स्टील प्रोवाइड करते हैं और जहां कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्यादा है वहां पे हम कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं. तो ये एक तरह से कंपोजिट मटेरियल है जो एक साथ ही पूरा बनता है. स्टील जहां जहां टेंशन साइड ज्यादा रहता है तो वहां स्टील प्रोवाइड हो जाती है. और जो आरसीसी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर आपके सीमेंट, एग्रीगेट में सैंड और ग्रेवल्स दोनों आएंगे, वाटर, स्टील रेनफोर्समेंट बार, एडमिक्सचर्स. तो ये जनरली आपने ये पूरा कंपोजिट मटेरियल काफी बार बनते हुए भी देखा होगा. ये किसी भी स्ट्रक्चर की बहुत हाई राइज बिल्डिंग को बनाने के लिए आरसीसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फुटिंग. तो दो टाइप की फुटिंग है, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन. शैलो फाउंडेशन में आइसोलेटेड, स्ट्रिप, कंबाइंड एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन आती है और डीप फाउंडेशंस जो हैं उसमें पाइल फाउंडेशन एंड कैशंस आती है. ये जो फाउंडेशंस है इनका जो भी साइज और ये सब जो है वो डिपेंड आपका करता है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे कि कौन सी टाइप की कितनी बियरिंग कैपेसिटी है. उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है आइसोलेटेड,
करना है, कंबाइन करना है, या बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा पुअर होती है तो राफ्ट, मतलब पूरा का पूरा एक मैश जो है स्लैब आरसीसी का, वो इसके अंदर प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये आपके डायग्राम्स हैं जिसके अंदर आपका वॉल, सिंपल फुटिंग, कॉलम, ये आप देखिए डिफरेंट टाइप की जो फुटिंग्स हैं, वो ये आपकी पूरी मैट फुटिंग है जिसके अंदर पूरा ये कॉलम्स हैं, और यहाँ पूरा का पूरा स्टील जो है आपका, स्टील का पूरा मैट या मैश जो है वो आपका प्रोवाइडेड होता है। ये आपकी कंबाइंड फुटिंग है। कंबाइंड में भी ये आपकी रेक्टेंगुलर फुटिंग आ जाती है, और इसके अंदर आपकी ये कौन सी है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है। वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। कोई दो कॉलम्स अगर आपके पास हैं और उनकी आइसोलेटेड फुटिंग ओवरलैप कर रही है तो आप कंबाइंड फुटिंग बनाते हो। ये स्ट्रैप फुटिंग है। इसके अंदर आपका बीम जो है वो भी, इसमें ये इसको स्ट्रैप बीम बोलते हैं। तो इसके अंदर दो कॉलम जो है वो आपके इस तरह से एडजस्ट करके बनाते हैं कि इसके अंदर ये जो बीम है ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो इतना मटेरियल आप देखिए यहाँ पे आप बचा सकते हो। यहाँ पे ये पूरा कंबाइन में वैसे नहीं लेके, ये आपकी एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग है।